इनका बेल बॉन्ड भी कैंसिल हो ये गया। झूठ बोल रहे हो कि और मंगा ये ही लिया लड़की जाए। जो है इनका बेल टूटा हुआ है। अभी बेल टूटा मिलोड जी, 2 डेट पहले इनका बेल भी टूट गया। मेरा बेल हुजूर 2 डेट पहले, हुजूर झूठ बोल रहे हैं, आज तक हम पेमेंट कर रहे फिर हैं। आपको बोलने नहीं आता, झूठ नहीं बोल ऐसे बोला जाता है, झूठ बोल रहे हैं। हुजूर हमको भी बेल बॉन्ड नहीं टूटा हुआ है, जहाँ मेरी जानकारी बोलने की भाषा समझिए। यस, पिटिशनर इज माय लॉर्डशिप यूनानी चिकित्सक। यूनानी चिकित्सक जी, ये क्या होता है? यूनानी सर वो डॉक्टर है मिलोड। यूनानी जो दवा आती है ना, अपने से प्रिपेयर करके वो लोग देते तो हैं। 4000 रुपया तो आपको देने बोला हुजूर बाय वे ऑफ एनेक्सर 2 माय लॉर्डशिप पेज 15 माय लॉर्डशिप। यस, कोर्ट का आदेश हुआ है, आज तक हम देते आ रहे हैं। और बाई तो बेल के लिए दे रहे हैं ना आप? जी हुजूर, और वो बेल बॉन्ड मिलोड बाय वे ऑफ एनेक्सर 2 माय लॉर्डशिप पेज 21। यस, कंसलेशन प्रोसीडिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन माय लॉर्डशिप। से घाटी में मामला चल रहा है। 15 लाख की बात हुई थी, 7.5 लाख पर मामला टिका हुआ है। अब वो फाइनल स्टेज पे हुई है, वो भी नहीं रहना 17 का ऑर्डर है ये। जी 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 ये 17 का ऑर्डर है नेक्सर 3। जी 6, 9, 17 हुई। तो हम लोग अब बीच में बातचीत चल रही है वहाँ नहीं पर। नहीं, इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। नाउ 5 years हैव गॉन। फाइनल पे हुजूर है अब तो। आर यू पेइंग समथिंग टू द वाइफ और नॉट? अभी भी दे रहे हैं हुजूर, आज तक दे रहे हैं। नो मिलोड। मिलोड अगर विद मिलोड्स परमिशन Yes. सबमिटिंग मिलोड कि 28 मार्च को ये मेंटेनेंस का ऑर्डर इनका हुआ था उस 2018 में, लेकिन अब तक इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। वो जो साढ़े ऑनरेबल जस्टिस संजना प्रकाश ने जो ऑर्डर किया था 750 रुपया देने का, वो भी इन्होंने स्टॉप कर दिया मिलोड। इनका बेल बॉन्ड भी कैंसिल हो गया झूठ मिलोड। बोल रहे हो कि और मंगा ये ही लिया लड़की जाए। जो है हुजूर, इसकी एक अकेली माँ थी सिर्फ, शेरघाटी वहाँ में से रहती मंगा है। लिए हुजूर। और एक मिनट वो भी उसका भी डेथ हो गया हुजूर। एकदम अकेले था, एक खलेरे भाई के साथ बेसहारा रहती है। इनका बेल टूटा हुआ है। अभी बेल टूटा मिलोड जी, 2 डेट पहले इनका बेल भी टूट गया। मेरा बेल हुजूर 2 डेट पहले, हुजूर झूठ बोल रहे हैं, आज तक हम पेमेंट कर रहे फिर हैं। आपको बोलने नहीं आता, झूठ नहीं बोल रहे हो। ऐसे बोला जाता है, झूठ बोल रहे हुजूर हैं। हमको भी बेल बॉन्ड नहीं टूटा हुआ है, जहाँ मेरी जानकारी बोलने की भाषा समझिए। ठीक सॉरी है। हुजूर। और आज तक अप टू डेट पेमेंट मेरा हुजूर है, वहाँ से एलसीआर मंगा लीजिए हुजूर, देख लीजिए हुजूर। कितना पेमेंट? वही 750 का ना? अभी तक हम करते आ रहे हैं। ये और पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं ना? 750 रुपया में क्या होगा? हुजूर जहाँ तक बात है हम लोग का मेंटेनेंस की बात हुजूर, उसके बाद से ये कंसलेशन में चला, बीच में कोरोना हुजूर हो गया, लेकिन अभी भी लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के यहाँ मामला पेंडिंग है, चल रहा है। हर एक डेट को दोनों पक्ष आके बस बार्गेनिंग हुजूर सिर्फ हो रही है कि 15 से 7.5 लाख पे आए हैं। लड़की भी वहाँ जॉब कर रही है, वहाँ स्कूल में। ऐसा नहीं कि वो हैंड टू माउथ है कि हुजूर। नहीं मिलोड, ये हम रॉन्ग जो- स्टेटमेंट है। लड़की एकदम हुजूर, बेसहारा कल ही हुजूर दे, हम कल सप्लीमेंट्री फाइल करके इत्तेफाक से दिखाया हम तो उसको देखा पूरे है। फोटो के साथ हुजूर दे देते हैं। हम क्या बताएं, कोई सहारा उसका नहीं, कोई जॉब डायरेक्शन अगर हुजूर देते केस बहस होने लगता है तब सब याद आता है कि कल ही दे देते हैं। केस जब पेंडिंग रहता है लिस्ट पर तब क्या करते रहते हैं, क्यों नहीं देते हैं? प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हैं, माय लर्निंग फ्रेंड नहीं, बोलेंगे नहीं कर रही है, सीधे मिलोड इंक्वायरी करवा लेंगे। अगर वो काम कर रही हैं तो वो उसके लिए आप एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट बिलो में। वहाँ से जो फैमिली कोर्ट से कोर्ट ट्रांसफर होकर चला गया है, लर्निंग डिस्ट्रिक्ट जज के पास। कोई कानून की बात कीजिएगा कि वैसे ही कीजिएगा, उसके लिए प्रोविजन है ना। जी, अगर कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की जरूरत है, इसमें देन यू हैव टू फाइल एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। इस हुजूर जब डेवलप हो गया कि हम लोग एक दूसरे से नहीं रहेंगे, फाइनल चलने लगा कि heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the opposite party. Petitioner in the present case is seeking setting aside of the opposite party number 2 कर दीजिएगा, setting aside of the impugned order annexure 1. Next, learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is practicing Irani medicines, Unani medicines, BUHMS की Urani medicines, Unani medicines. Full stop. It is submitted that the learned court below has fixed maintenance allowance of rupees 4,000 without correctly assessing the income of the petitioner.
Full stop. It is also submitted that the efforts are on to resolve the matrimonial disputes amicably. Full stop. In this connection, the order of the learned coordinate bench of this court passed on 6/9/2017 in criminal miscellaneous number 34912 of 2014 within bracket the 3 has been referred to. Next, learned counsel further submits that in terms of the order passed on 20/11/2014 in criminal miscellaneous number 34912 of 2014 by another learned coordinate bench of this court, the petitioner is paying a sum of rupees 750 per month to the opposite party number 2. Full stop. Next, on the other hand, learned counsel for the OP number 2 submits that OP number 2 is a neglected woman. Full stop. Her mother has recently died and she is alone. Full stop. It is submitted that the petitioner is not even regularly paying that amount of rupees 750 per month, and in the name of amicable resolution of disputes, he wants to avoid his liability to pay rupees 4,000 per month, which is the amount fixed as maintenance allowance to the OP number 2. Full stop. Next, having heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for OP number 2, this court finds that admittedly the petitioner and OP number 2 are husband and wife respectively. Full stop. It is not in dispute that the opposite party number 2 is residing in her Maike after she was allegedly thrown out of her matrimonial home. Full stop. Next, the learned court below has found that the applicant dash wife had examined altogether 4 witnesses to substantiate her claim, and they have duly supported the case of the applicant wife. Full stop. The husband, the supposed party, had cross-examined the applicant's witnesses the applicant witnesses were initially examined in an ex parte hearing fixed by the court, but later on the opposite party appeared and the ex parte hearing order was recalled, and the opposite party cross-examined AW2, AW3 and AW4. But when the applicant witness number 1 appeared in the court for her cross-examination, then none appeared in court for her cross-examination. Full stop. Even after deferring her cross-examination, she was not cross-examined, and a request was made by the opposite party to pass an appropriate order. Full stop. Next, this court therefore finds that the evidence of AW1 saying that her husband is earning rupees 30,000 to rupees 50,000 per month has not at all been disputed. Full stop. He owns 2 houses and earns a rent of rupees 15,000 to rupees 20,000 per month is also not disputed. Full stop. Such circumstances, court finds that the award of maintenance
of rupees 4,000 to the opposite party number 2 is by no means excessive or exaggerated one. Full stop. In the name of pendency of this revision application, the petitioner has been avoiding his liability to pay the maintenance for last more than 4 years. Full stop. In these circumstances, while dismissing this revision application, this court directs the petitioner to pay the current as well as the entire area outstanding amount with interest thereon at the rate of 12% per annum with a litigation cost of rupees 15,000 to the opposite party number 2. Full stop. Next, the entire amount shall be realized from the petitioner by the learned court below in accordance with law expeditiously.